बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर हमारे पास आज 5 है। इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द आर्किटेक्चर ऑफ वन न्यूमन कंप्यूटर्स। तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी? द वन न्यूमन आर्किटेक्चर is a computer paradigms delineates or system in which the hardware of computer has four primary components। यानी कि इसके अंदर जो कंप्यूटर था वो प्राइमरी तौर पर 4 कंपोनेंट पर मुश्तमिल था। द मेमोरी, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, इनपुट मैकेनिज्म एंड आउटपुट मैकेनिज्म। दिस मॉडल इज कॉल्ड जॉन वन न्यूमन मॉडल्स। इस मॉडल को क्या नाम दिया गया जी? जॉन वन न्यूमन मॉडल का नाम भी दिया गया। The Neumann models named in honor of his mathematicians and physicians who contribute to its developing during the 1940। यानी कि इसके आजाद में इसका नाम रखा गया जिसने इसकी कंट्रीब्यूशन में 1940 में पार्टिसिपेट किया। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि ये वन न्यूमन जो कंप्यूटर था इसके जो की पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे, तो नाउ वी विल लुक अ ब्रीफ overview of the key parts that constitute the architecture of one Neumann computer। memory क्या contain both input data and the instructions यानी programs required for CPU processing। for instance, consider the RAM of your computer। when a program start it's loaded into the RAM to enable faster execution compared when जब it is run from the hard disk। यानी कि अगर यानी कि कोई भी प्रोग्राम अगर मेमोरी में पहले से लोड होगा रैम में तो वो कंप्यूटर फास्टली वर्क करेगा। अगर वही एज कंपेयर यानी कि अगर हम हार्ड डिस्क से उसी को लोड करेंगे तो उस पर ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए जो रैम मेमोरी होती है वो फास्टर मेमोरी होती है बानिस्बत किसके? हार्ड डिस्क के फास्ट होती है। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास इसका था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। So perform addition and subtractions and execute commands provided by the memory। The system has two main components, the arithmetic logic units ALU and the control unit यानी CU। इसके यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फर्दर दो पार्ट्स पर डिवाइड था जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल इक्वेशन को करने के लिए था, और इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट्स। द आर्किटेक्ट लॉजिक यूनिट यानी कि ALU परफॉर्म द मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन। और कंट्रोल यूनिट का क्या काम था? कंट्रोल यूनिट इज अ peripheral that govern the activities of the CPU by instruction and ALU memory to execute tasks according to the program instructions। और it ensures ये इंश्योर करता था the proper and timely execution of duties by all other components। इसका काम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, उसको टाइमली कंप्लीट करवाना इसकी ड्यूटी होती थी। When doing the calculation 2 plus 2 on the calculator application, the arithmetic logic यानी units handle the numerical values while the control units supervise the whole procedure। यानी कि पूरा जो प्रोसीजर हो रहा होता था वो CU यानी कि कंट्रोल यूनिट के अंडर हो रहा होता है। यानी कि 2 plus 2 आंसर जो आया 4 आया, कैसे आया, सारा कुछ किसके अंदर हो रहा होता था? कंट्रोल। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें तो हमारे पास है इसका कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनको जरिए हम सिस्टम को डाटा इनपुट करते हैं, उसमें इंटर करते हैं। इनेबल यूजर टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर system। Illustrative example including keyboard, mouse, microphone, entering text on the keyboard, transmit data to the CPU for the subsequent processing। नेक्स्ट हमारे पास था इसका आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट डाटा हुआ, प्रोसेस हुआ सिस्टम के अंदर
और उसकी आउटपुट दिखाने के लिए भी हमारे पास क्या थी, आउटपुट डिवाइसेस थी, जिसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास मॉनिटर, स्पीकर, present or communicate the outcome of the task executed by the computers. Consider, for instance, a monitor and a printer. Upon completion of data processing, the CPU transmits the outcome to the monitor for visual display. यानी कि वो उसकी फाइनल जो विजुअल डिस्प्ले जिसको हम देख सकते हैं वो सिस्टम पर जाहिर होती है, मॉनिटर पर। और सिस्टम बस क्या होती है जी, जिस तरह हमारी एक कॉमन बस क्या होती है, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन mechanism that facilitate the movement of data between the component inside the computational system। यानी कि इसका काम भी क्या होता है, डाटा को कंपोनेंट्स के दरमियान ट्रांसफर करना, लेके जाना, लेकर आना। इट कंपेयर्स डाटा बस का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट डाटा। एड्रेस बस मेंटेन द डाटा डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, यानी इसका काम क्या है, एड्रेस लेना। डाटा बस का काम क्या है, डाटा लेकर जाएगी। एड्रेस बस के जिस कंपोनेंट के पास डाटा जा रहा है उसका एड्रेस लेना। कंट्रोल बस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसका काम क्या होता था, उसको इलेक्ट्रिकल के तौर पर उसको कंट्रोल रखना कि कोई डाटा इसमें से यानी कि डिसऑर्ड ना हो या इस तरह का कोई इशू इसमें क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग, ये काम किस तरह करते हैं जी। तो सबसे पहले वन न्यूमन की वर्किंग देखेंगे। वन न्यूमन आर्किटेक्चर encompass three essential stages for CPU to carry out instructions, namely retrieval, interpretation, execution and storage। यानी कि रिट्राइव करवाना, इंटरप्रेट करवाना उस डाटे को, फिर एग्जीक्यूट और फिर उसको स्टोर करवाना। To demonstrate this procedure, we will use the examples two-digit addition with the basic calculator application. So fetching description. The central processing unit retrieve an instruction from the computer memory. These instructions specify the operation to be executed by the CPU. Hardware components, memory, CPU, यानी program counter, PC, instruction registers. Specification क्या है जी, ये programs counter यानी कि PC store the memory addresses of the subsequent instructions. Once the address is stored in memory, the instructions located at that address is retrieved and placed into the instructions registers IR. नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या, डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंदर भी हमारे पास क्या जी, in order to determine the necessary action and control unit decode the instructions. Comparing component control units detail, the control units decode the operatic यानी के codes, operation codes of the instruction and determine the required procedures and next है हमारे पास executions। description क्या है जिसकी, the CPU process the instruction when the instructions involve a computation, it is executed by the arithmetic logic units. Any task that require transforming data between the several locating in managing by the CPU, यानी कि सारा काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। इन्वॉल्व कंपोनेंट कौन से होते हैं जी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें, द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स कैरी out mathematical and logical calculations, while the control unit handle data transmissions activities। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका जी स्टोरिंग। रिकॉर्डिंग के बाद काम क्या होता है, लास्ट स्टोरिंग। descriptions, the outcome of the computation is either returned to the memory or is sent to output devices। involvement components कौन कौन से होते हैं इसमें जी, memory and output devices। specifications, the outcome is either stored into the
Designated memory locations are sent to the output devices such as display यानी कि मॉनिटर या प्रिंटर को डाटा भेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कैरेक्टरिस्टिक्स। Following are the key characteristics of the one Neumann computer architectures। तो सबसे पहले हमारे पास क्या सिंगल मेमोरी स्टोर। Both program instructions and the data are stored in the same memory space. For example, in a computer game, both the game code and the data like source and player position are the stored in the same RAM. Second is sequential execution. Instructions are processed one after another in the sequence. For example, when the CPU run a program, it follow the instructions in the order they are written. थर्ड है हमारे पास स्टोर प्रोग्राम concept. Programs are stored in memory and can be changed by the computer. For example, when you update the software program, the new instructions replace the old one in memory. यानी कि पहली जो न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं वो ओल्ड पे क्या हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या थे वन न्यूमन आर्किटेक्चर के। तो सबसे पहले हम एडवांटेज देखेंगे। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द वन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर डिस्कस हियर। एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं जी। सिंप्लीफाइड designs by combining the instructions and the data into the single memory area architecture is simplified. Flexibility. Program can be easily changed by the changing memory contents. Disadvantages. The one Neumann's bottleneck occur when the single memory area limits the CPU ability to retrieve instructions and data quickly. Security risk है जी। Having the data and instructions stored in the same area so poses problem when the one program can alter another instruction in the manner that is security risk। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसकी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। तो लास्ट टॉपिक हमारा है द वन न्यूमन आर्किटेक्चर is a key important aspect of design and structure of many computers, serving as the central models on how they operate. It is like to receive feed into the computer which follow it exactly, ensuring that both data and instructions are properly processed. However, this model has been essential in the evolution of computing technology despite its limitations। तो यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।